अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले हम एक टेबल जो इन्होंने बनाया आपने दिया है उसमें हम फार्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले हम उस टेबल की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पेज पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अगेंस्ट ये टेबल 5.1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अगेंस्ट जो पैरामीटर्स हैं उनकी इक्वेशंस दी हुई है। ओके, सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम रिव्यू करके आए हैं। सो द इनपुट इम्पीडेंस you can see the input impedance, the formula used for the input impedance, and if this condition is true we have to verify this condition and then we can use this formula. अस्सलाम वालेकुम मुबशर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। आप पहले सेशन में नहीं थे करिए। जी सर। पहला सेशन था 4 PM का, उसमें तो आप मौजूद नहीं थे करिए। जी सर, बस मैं बाहर गया हुआ था सर काम से ना, तो इस वजह से नहीं अटेंड कर सका। अभी सर आया हूँ मैं घर पे। ओके, कुछ चीजें हम कर चुके हैं। अब ये दूसरा सेशन है और इसमें हमने न्यूमेरिकल करने हैं। अभी हम वो फार्मूलाज देख रहे हैं जो हमने यूज करने हैं। इन फार्मूलाज को हम यूज करते हुए प्राइमरली जो इक्वेशन जो मालूम करेंगे, ये जो पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स ये प्राइमरली इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा जो है कहीं पे जो करंट चेंज है उसके बारे में भी पूछा गया। So these are the formulas. We just copy these formulas so that these formulas are with us when we solve the question for the fixed bias. So similarly, with as with the fixed bias, the formulas are given for the voltage divider bias, and in this case जो है वो ये जो ये कैपेसिटर है इसका इफेक्ट जो RE रेजिस्टेंस है इसको आउट कर दें। And if we remove this capacitor from the circuit, then we have the formula जो कि नीचे configuration है उसमें दिया गया है। So then we use this configuration in which the unbypass configuration RE is now part of the network. Rest of the configurations are not important, they are not of interest. अगर वो कभी इनकाउंटर होंगी तो वो आप आसानी से उनको कर लेंगे। Now we go to the numerical, और numerical करने से पहले हम इन फार्मूलाज को अपने पास एक जगह पे कॉपी करें। और this fixed bias configuration, so these formulas are with us now. We just paste them for our reference. So when we primarily solving the circuit, we use these formulas. Now we move towards the example जो हमने करना है। Quickly मुझे जाना होगा। हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है। This is the example 1 of chapter 5. As you can see, determine the primarily the resistance of input side, जो कि ट्रांजिस्टर जो डायोड की रेजिस्टेंस है,
and find Z input with the R output is given as infinity. Similarly, calculate Z out with R out is given as infinity. Infinity is not a term which is primarily used, but if a resistance is, let's say, 1 mega ohm, okay, we can assume this resistance is too high to allow any kind of current to pass through it. So we take it as infinity for circuits as an approximation. To determine the voltage gain, the voltage gain for the similar condition, the circuit is given below. So as you can see, this is a simple fixed bias circuit. And fixed bias circuit, we can use the formulas which are given here, but we need to identify different parameters. Like in this formula, we need to identify RB and beta RT. Okay. So RE we need to find. So how we find the RE, for example? So the RE formula, we have to perform the DC analysis. So RE as 26 millivolts divided by the current through limit. This is its formula और इस फार्मूला की मदद से हम इसको मालूम करेंगे. जैसे हम वो यहाँ से आई की वैल्यू मालूम करेंगे और इसके बाद आईसी की वैल्यू मालूम करेंगे और आईसी हमें पता है बीटा आई भी होता है. और इस तरीके से आई हमें पता है बीटा प्लस 1 इंटू आई भी होता है. ये फार्मूलाज आपको गिवन होंगे. सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट. और कैलकुलेट में जब हम आई बी मालूम करेंगे, लेट्स सी द आई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बी. So 12 volts minus 0.7 volts. हम इसी एनालिसिस करेंगे पहले ताकि हम आर ई की वैल्यू मालूम कर लें डिवाइडेड बाय द आर ई व्हिच इज 473. जब हम ये वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. So here we have the calculator. So in calculator we write the formula. So 12 minus 0.7, this is 11.3. 11.3 divided by 470. So the answer should be in here. So it should be 24 microamperes. So from here we can multiply it with beta to get what is the IE. So beta plus 1 is 100 plus 1. So we have 101 multiplied with this 240. Oh, sorry, 24 micro. So let's see what is the value of IE. We need to use the calculator. So in calculator, we write here the 101 multiplied
24. So it is 2424. We convert it into the milliamperes. So it will become 2.424. So we write here 2.424 milliamperes. After that, we have to calculate what is E by using this formula. इसे ये सिर्फ फार्मूलाज की मदद से ही मालूम करेंगे. इसको यहाँ कंप्लीट करने के बाद एक दफा मैं रिपीट करूंगा ताकि आप तमाम स्टेप्स देख लें दोबारा से. So RE is equal to 26 millivolts divided by 2.424 milliamperes. So milli will cancel with milliamperes and we get RE is equal to. तो यहाँ पे भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी. तो we use the calculator. Multiply 26. We divide 26. 2.424. 2.4. We get about 10.7. 10.7. We write here 10.7 ohms. So this is the distance we find by using RE. So once we know the value of RE, we can find the rest of the parameters by using the equations that we have. लेकिन उससे जाने से पहले मैं इस तमाम स्टेप्स को रिपीट करना चाहता हूँ. इस सर्किट में हमें कहा गया कि आप जो है इनपुट इम्पीडेंस मालूम कीजिए, आउटपुट इम्पीडेंस मालूम कीजिए और इसी तरीके से जो गेन है वो मालूम कीजिए. और जब हम इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला देखते हैं तो उसमें हमें एक पैरामीटर RE को मालूम करना है. RE का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके लिए हमें IE की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी. That is by using DC analysis. So we go towards the DC analysis and use the formulas to find out the value of IE and then use the value of IE here to finally find the value of the R. अब ये वेरीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे इससे पहले मैं सब स्टेप्स को मिटाना चाहूँगा. Okay, as you can see, the IB by using the formula जो अभी हमने देख रहे थे, इससे 24 microamperes, and similarly IE with beta plus 1, which is 101 multiplied with this equation, and we get 2.4. We get 2.424, whereas this is 2.428, very close, and we get the value of RE, which is 10.7, which is very close to our answer as well. So once we get this value, the rest of the process is very easy, in which we just need to apply the formula to get the value of beta RE. And once we get the beta RE value, we can find the Z input impedance by using again the parallel resistance formula, which comes out to be this. Then Z out, which is RC, because when we take the parallel with a infinity resistance, so we can write it like the lower resistance, the lowest, which is R. We can approximate it with R. So this is the same case if we, for example, approximate R, a parallel with 10R. So because it is 10 times higher, we can approximate it is primarily approaching towards infinity, and we can write the same, that it can be approximated as R. So this is the
application of the parallel formula. इसमें हम जो parallel equation है उसको यूज करते हुए करते हैं। कुछ इसको मजीद समझने के लिए थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल फार्मूला जो है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है 1/r + 1/∞, 1/∞ will lead to making this term as 0, and because this term will become 0, this whole term become 1/1/r, which then become r. So this is another way to explain the same thing. So we can do the detailed steps as well, but the formula is given and the values are given, so we can easily find the rest of the solution up till here. So all the values are known, the input impedance is known, the output impedance is known, similarly the gain value is known, and also this question, this example says that you have to repeat the same parts for this example, part C and D, with the R0 is equal to 50 kilo, and compare the results. So when we use the 50 kilo ohms R out, 50 kilo ohms, then we can find that in E part that the output impedance is 2.83 kilo ohm, which is very close to the 3 kilo ohms. And similarly the gain, which is minus 264.24, which is not very close, but we can see it's a close approximation, say about 280. Okay, 15, only 15, difference of 15, which is okay when we approximate it. So this is the way how we solve this example 1. And if you are given with different values, for example, for voltage and for this beta, for R0, R0, and this value RB, so you can easily work out this circuit. जी मुबश्शिर क्या कहते हैं आप? जी मुबश्शिर बताइए। जी फैसल आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आपको ये क्योंकि आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आप लोगों को ये पूरा देखना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप इसको कर पाएंगे। ये तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फार्मूलाज की एप्लीकेशन है। आप एक दफा फार्मूलाज आपके सामने हो, यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन। मैं पूरा डिटेल में आपको करके दिखा दिया है कुछ चीज़ों को जो कि इसमें इतनी डिटेल से नहीं उन्होंने बताई गई, बट आई हैव ओके। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर प्राइमरीली डूइंग द एग्जांपल। सर ये लास्ट चैप्टर है सर? जी बताइए सर ये लास्ट चैप्टर है, बस यहाँ तक पेपर का जो कोर्स। ये चैप्टर करना है हमने, 5 चैप्टर तक पढ़ेंगे। ठीक है सर। हाँ, इसके बाद अब हम रिपीट करना शुरू करेंगे ना। Okay, this example is with the voltage divider bias, and we are to find the same quantities as given in the last example. But the circuit is given. The circuit given is different. As you can see, this is a voltage divider bias, and when we primarily form the circuit, this resistance will also go away. Okay, resistance भी खत्म हो जाएगा. So we okay. So we just need the formulas and we have to apply the formulas. Okay, ये important चीज है। इसमें जब आप काम कर रहे होंगे तो आप वो पहले यहाँ पे ये वोल्टेज मालूम करेंगे, यहाँ क्या वोल्टेज है, इस वोल्टेज की मदद से फिर आप जो है ये यहाँ से गुजरने वाली करंट मालूम करेंगे जो कि IE होगी, क्योंकि हमें RE मालूम करने के लिए
जो हमारा फार्मूला है वो 26 मिली सर पास आ गई। दैट इज बाय आई। जी बेटा, आपका कोई सवाल है, पूछे। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी। दरअसल आप बोल रहे थे ना, तो सर दरअसल मैं बोल रहा था यहाँ से, लेकिन मेरी शायद आवाज नहीं आती, शायद आप नेटवर्क की वजह से। ओके ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ये? जी जी समझ आ रहा है सर। कोई बात नहीं, आप वीडियो भी जरूर देखिएगा और फिर इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस भी करेंगे इसको, और जब रिपीट कर रहे होंगे उस वक्त और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो जब हम आई मालूम कर लेंगे डीसी एनालिसिस से, उसके बाद हमारे लिए जो है वो जो फार्मूलाज दिए हुए हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे। इसको देख लेते हैं कि जो है वो किस तरीके से किया गया है। ओके, एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स कि क्या जो अप्रोक्सीमेट मॉडल है वो हम यूज कर सकते हैं। This is the condition for the approximate model which is given in the case of voltage divider bias, because it is satisfied after putting the values, it is satisfied, so we can use the approximate approach. तो approximate approach के formulas use करेंगे। जब approximate approach के formulas हम use कर लेंगे, then we get IE। IE की वैल्यू हमें मालूम करना थी और IE की वैल्यू फिर हम यहाँ रखेंगे इस फार्मूला के अंदर, और इससे हमें जो है वो आर ई की वैल्यू मिल जाएगी। आर ई की वैल्यू जो है वो आपके पास स्मॉल वैल्यू होगी और ओम्स में होगी, ठीक है, ये याद रखिए। Okay, then we can find the input impedance by using the formulas which are given. So because we have to find the three parallel resistances, तो इन्होंने दो स्टेप्स में इसको किया, पहले आर डैश मालूम किया फिर आर वन किया है। एक्चुअली जो इसका फार्मूला है वो इस तरीके से है कि Z इनपुट इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद बीटा R। दिस इज द फार्मूला, लेकिन चूंकि इन्होंने इसको दो स्टेप्स में किया है, पहले इसका पैरेलल निकाल के R डैश और फिर इसका जो पैरेलल है वो बीटा RE के साथ मालूम किया। तो दिस इज एन अप्रोच जो कि कंपटीशन है उसको रिड्यूस कर सकती है। सो द आंसर इज 1.35 kilo ohms. This is the input side impedance, and similarly we can find the output impedance and the gain by using the approximate model, and similarly we can find the E, the solution with the R0 included. इसमें R0 जो है वो 50 किलो ओम दिया हुआ है, and you can see there is that these results are close, but these results are not very close, they are very different. ये 320 है, ये तकरीबन 370 है, तो it's a difference of 50, difference of about 50 का डिफरेंस है, which is a huge difference. तो इस तरीके से जो है वो हम न्यूमेरिकल को करेंगे। Okay students, this completes our session. If there is any question, please question if there is any question. You can ask me. जी मुबश्शिर, आपका कोई सवाल है? Okay, दो एग्जांपल्स हमने किए हैं, यही आपका होमवर्क है। दो एग्जांपल 5.1 एंड 5.2। ओके स्टूडेंट, आज का सेशन यही तक, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक यू।